Hello friends, welcome to the new project. This is a new project in the Arduino block coding series where we are going to block code our Arduino Uno using Tinkercad block coding. So for today's project, we will be requiring an Arduino Uno, then we will be requiring a potentiometer, then two motors, just a moment, two gear motors, and to drive those motors, I'll be using L293D motor driver. सो आज के प्रोजेक्ट में हम आर्डिनो यूनो का इस्तेमाल करके स्टेयरिंग कंट्रोल रोबोट बनाने वाले हैं जिसमें हम पोटेंशियोमीटर की मदद से रोबोट को टर्न करेंगे, जिसके लिए हमको दो मोटर्स लगेगी, एक पोटेंशियोमीटर लगेगा और एक मोटर ड्राइवर लगेगा L293D। सबसे पहले तो मैं सर्किट को ठीक से अरेंज करा लेता हूँ। आर्डिनो यूनो मेरा यहाँ पे है। ओके, ये मेरे दो मोटर है। Connections, to make the connections I'll be using breadboard. Okay, so to make my connections I'll be using breadboard and I'll be making connections. आज के कनेक्शंस थोड़े टफ होने वाले हैं बिकॉज L293D एक मोटर ड्राइवर है जो मल्टीपल मोटर्स को कंट्रोल कर सकता है। जनरली ये दो मोटर्स को कंट्रोल करता है। देखिए L293D, अभी L293D में टोटल 1 2 3 4 5 6 7 8, इस तरफ 8 और इस तरफ 8, ऐसे मिला के 16 पिन्स है। तो इन 16 पिन्स का कनेक्शन हमको आर्डिनो के साथ और मोटर्स के साथ, दोनों के साथ हमको करना है। सो L293D इज अ डिवाइस, इट इज अ मोटर ड्राइवर विच इज यूज्ड टू ड्राइव two motors at once. It provides them with power as well as variables of speed. ये स्पीड कंट्रोल कर सकती है और मोटर्स को प्रॉपर पावर भी देती है। तो आइए पहले कनेक्शंस बनाते हैं। तो सबसे पहले तो आर्डिनो से मैं बोर्ड पे कनेक्शन ले लेता हूँ। yes, और इधर मैं मेरा पोटेंशियोमीटर अरेंज कर देता हूँ। ओके, ये मेरे मोटर्स है यहाँ पे। First I'll take 5 volts and I'll connect it to the breadboard. Similarly ground. Yes, so what I'll do is I'll make connections from here to the positive here. So both the rails I'll make positive. मैं दोनों रेल्स को पॉजिटिव कर देता हूँ। वो मेरा 5 वोल्ट्स का कनेक्शन दोनों रेल्स में दे दिया है मैंने। उसी तरह मैंने मेरा ग्राउंड का भी कनेक्शन दोनों रेल्स में दे दिया है ताकि मुझे कनेक्शन में आसानी हो। सो देखिए अभी ये सारे रेल्स मेरे पॉजिटिव है, उसी तरह ये भी रेल मेरा पॉजिटिव है, और ये सारे रेल्स मेरे नेगेटिव है और ये भी रेल नेगेटिव है। अब मैं यहाँ पे पोटेंशियोमीटर का इस्तेमाल कर रहा हूँ। ओके, तो सबसे पहले तो मैं मेरे पोटेंशियोमीटर को कनेक्ट कर लेता हूँ। सो पोटेंशियोमीटर एक ऐसा डिवाइस है जो वोल्टेज को 0 से लेके 5 वोल्ट तक रेंज करेगा। सो मैं यहाँ पे एक एंड पोटेंशियोमीटर का ग्राउंड पे लगा रहा हूँ। One end of the potentiometer I am connecting it to ground, other end I am connecting it to 5 volts. So for 5 volts I am putting it red. Next I am connecting the wiper end of the potentiometer to analog pin. So I am giving it to analog pin number 5, A5. So हमको पिन याद रखनी है, इसका वाइपर मैंने A5 पे कनेक्ट कर दिया है। So पोटेंशियोमीटर का वाइपर एनालॉग A5 पे कनेक्टेड है। सो हमको ये याद रखना है। आइए अभी मोटर ड्राइवर के कनेक्शंस करते हैं। सो मोटर ड्राइवर के कनेक्शंस के लिए सबसे पहला तो फर्स्ट पिन अनेबल पिन। सो आई एम कनेक्टिंग दिस अनेबल पिन टू 5 वोल्ट्स। मैं अलग कलर से दे रहा हूँ। सो आई एम कनेक्टिंग अनेबल पिन टू 5 वोल्ट्स। देन मैं बाकी के जो ऑब्वियस पिन्स है वो कनेक्ट कर देता हूँ पहले। देखिए ये दोनों ग्राउंड है तो ये ग्राउंड को कनेक्ट होंगे, तो ये मैं यहाँ पे ग्राउंड को कनेक्ट कर रहा हूँ। ग्राउंड आई जनरली शो बाय ब्लैक,
सो ये पिन ग्राउंड से कनेक्टेड है, ये भी पिन ग्राउंड से कनेक्टेड है। सो ये दो बीच के दो पिन्स ग्राउंड है। उसी तरह इनके सामने वाले जो पिन्स है यहाँ पे, ये भी ग्राउंड है। सो मैं इनको भी ग्राउंड पे कनेक्ट कर देता हूँ। देखिए ये और ये दोनों पिन्स ग्राउंड है। तो हमारे इन ऑल 1 2 3 4 5 पिन्स का कनेक्शन हो गया। टोटल 16 पिन्स है, हमको सारे पिन्स कनेक्ट करने हैं। अभी ये वाली पिन जो है वो पावर पिन है, तो इसको मैं 5 वोल्ट से कनेक्ट कर देता हूँ। 5 वोल्ट्स को मैं रेड से दिखा रहा हूँ। तो देखिए मैंने इसको पावर को कनेक्ट कर दिया है 5 वोल्ट से। अभी उसी तरह जैसे मैंने इस पिन को अनेबल 1 2 को मैंने 5 वोल्ट से कनेक्ट किया है, उसी तरह यहाँ पे अनेबल 3 4 है, इसको भी मैं 5 वोल्ट्स पे कनेक्ट कर रहा हूँ। सो दिस इज अनेबल पिन 3 4, सो आई एम कनेक्टिंग इट टू 5 volts. So the connections are very easy. It looks complicated, but comparatively it's not that much. So you can see now I've connected 1 2 3 4 5 6 7 pins out of 16. I'll be connecting all the pins gradually. So this end you can see here, this is also power. As this end is power, this is also power. So I am connecting it to 5 volts. Yes. So this is my okay. So I have made the obvious connections. Now let us continue with the rest of the connections. So now next are here we have input pin and output pin. Okay. So input pin is basically connected to one of the motors. So I'll be taking input input pin will be connected to Arduino, and similarly output pin will be connected to motor. So input means whatever motor driver is getting input from. So I'll be connecting my input pin to pin number 6. Let us connect this input 1 to pin number 6 of the Arduino. So I'll make the necessary connections. See, I'll put a different color. Okay, so I've connected it with pin number 6. Now the output pin, I'll be connecting it to one end of the motor. So I will try my level best to show you the proper connections without any confusion. Still, if there is, please forgive me for that, क्योंकि बहुत सारे पिन्स है यहाँ पे, बहुत सारे पिन्स are there to be used here today. So I'm connecting it to positive of the motor. Yes, so I'll use a different color. Okay. I hope it's visible. Now the output 2, second output is connected to yes. You see my input, this input pin output 1 is connected to one end of the motor, output 2 is connected to other end of the motor. I hope it is clear. And now I have input 2. Input 2 will be connected to pin number 9 on the Arduino. So input 2 will be connected to, I'll make it straight.
input 2 to pin number 9 on the Arduino. Okay. So I hope you must have understood these connections. So input 1 is to 5 volts. Then enable 1 and 2 is to 5 volts. Input 1 is on pin number 6. Output 1 is to one end of the motor. These two are grounds. Output 2 is the other end of the motor. Input 2 is on pin number 9 for Arduino, and power is on 5 volts. Now in the similar manner, I'll be making connections for the other side of the motor driver. So let us make those connections. So here this is again input 3, so I'll be connecting it to pin number 3 of the Arduino. Okay, so input 3 is with the Arduino. Now output pin to one end of the motor, you can say positive of the metal. And similarly, output 4 to other end of the motor, that is the negative of the motor. As such, motors doesn't have a positive and negative. Motors can run clockwise, anti-clockwise, depending upon what connections you make. So in that way there is no issue, but still we need the motors to run in one particular direction. Now the last one, that is input 4. So input 4 will be connected to pin number 5 on Arduino. So I'm taking input 4 and pin number 5. Okay, so we are ready with our connections. So we have made the necessary connections of the motor driver with the motors, and we have also inculcated an potentiometer which will control the speed of the motors, and in turn will give us a steering like feeling to our robot. Now let us code it to get the desired output. I hope the connections are clear. It is in front of you for your reference. Okay, so I'm moving ahead. So I'll be using blocks plus text. Okay, so I have on start, forever, and notation. Yes, I'll put here steering control. Steering control of a robot. Okay, so with respect to connections, program is comparatively very easy as compared to the connections. Still we will block code it. So let's take on start, let us print to the serial monitor. I'm putting it here. Let's control the robot using potentiometer. Let's control the robot using potentiometer. Okay, now let's wait 1 second block here. After this, so on start, I will get this message on the serial monitor, and then we will have a halt of 1 second.
Now let's set a variable. So I am taking a variable so that whatever variable I will get from my potentiometer, that will be utilized here. So I have created a variable vr underscore position. So I am taking my first block in forever set vr position 2. So whatever value I am going to feed to this vr position variable is going to come from my analog pin, and which is connected to A5. So whatever value which I am going to give from my potentiometer, मैं जो भी पोटेंशियोमीटर से वैल्यू दूंगा वो मेरे VR पोजीशन में सेव होगी. सो मैं VR पोजीशन को सेट कर रहा हूँ एनालॉग पिन A5 को रीड करने को. ओके उसी तरह मैं वही सेम वैल्यू सीरियल मॉनिटर आउटपुट भी लूंगा. सो मैं ले रहा हूँ प्रिंट टू सीरियल मॉनिटर एंड आई विल टेक रीड एनालॉग पिन A5. सो जो भी मेरी वैल्यू है वो मेरी सीरियल मॉनिटर पे भी दिखेगी. ठीक. सो नाउ इसके बाद आई विल सेट द पिन, सेट द पिन नंबर 3 बिकॉज मेरा एक मोटर पिन नंबर 3 पे कनेक्टेड है. सेट द पिन टू मैप जो भी वैल्यू मुझे A5 पे मिल रही है. सो मैप रीड एनालॉग पिन A5 ओके फ्रॉम 0 टू 255. ये एनालॉग की रेंज है. ये मैंने पिछले वीडियोस में भी बताई है कि पिन नंबर 3 की वैल्यूज 0 टू 255 तक चेंज करनी है जैसे ही इधर रीडिंग्स आएगी. अभी उसी तरह मैं इसी को डुप्लीकेट कर रहा हूँ, लगा रहा हूँ पिन नंबर 6. देखिए मेरी मोटर एक 3 पे है एक 6 पे है. फ्रॉम A5 तो इधर करूंगा 255 टू 0. सो क्या हो रहा है इस प्रोजेक्ट में, मैं जो भी पोटेंशियोमीटर की वैल्यूज रोटेट करके जो भी पोटेंशियोमीटर का वैल्यूज मैं 0 टू 5 वोल्ट्स के बीच में जो रोटेट करूंगा इसको एनालॉग में 0 टू 255 में वैल्यूज आएगी. जो वो वैल्यूज है वो मेरी VR पोजीशन में इस नाम के वेरिएबल में सेव होगी. उसी साथ वो सीरियल मॉनिटर पे भी दिखेगी. फिर पिन नंबर 3 मेरी A5 की वैल्यू रीड करेगा और उस वैल्यू को रेंज करेंगे 0 टू 255 तक या फिर 6 नंबर पिन पे 255 टू 0 तक, उस हिसाब से उसको रेंज करेगा. तो ये मेरा प्रोग्राम है इस रोबोट को स्टेयरिंग कंट्रोल करने के लिए. अब देखते हैं क्या ये पॉजिटिवली रन करता है कि नहीं. Now let us see what is happening. I'll explain the code one more time. So on start, I will get a serial message, message on the serial monitor, which is saying let's control the robot using potentiometer. Then I have created a variable vr underscore position where I am going to save the value which I have obtained from A5. Similarly, I will also print the value of A5 on the serial monitor. Then my pin number 3 to which my one of the motor is connected, I am going to read the value, I am going to map the value of A5 from 0 to 255. So as I turn the values, it is going to change the values from 0 to 255. Similarly, simultaneously, pin number 6, which is my other motor, its values will be changing from 255 to 0. So my motors are going to behave in opposite manners. Like speed of one motor is increasing, the speed of other motor is going to reduce. In that way, causing a turning effect. Now let us see my code, whether it is successfully running or not. Okay, so now you can see my one of the motors is running on 143 rpm while the other motor is on 0 rpm. Right now my potentiometer is on 0 volt. Now if I increase my potentiometer, you can see my motor on the left, the speed is reducing, while the motor on the right, the speed is increasing. So if I take it to 5 volts now, so you can see the motor on the right is having maximum rpm now and motor on the left is having 0 rpm. If I keep it in the center,
You can see my both the motors are tentatively having similar RPM. So when I keep the potentiometer in the center, the robot is going to move straight. But when I turn it here, now the robot is going to turn towards left. Similarly, if I do it here, the robot is going to turn towards, sorry, vice versa. Sorry, when I keep it here, the robot is going to turn towards right, and similarly when I keep it here, the robot is going to turn towards left, because the left RPM is more as compared to the right, so the robot is going to turn towards left in that way. Now I can show you the values on the serial monitor as well. So you can see the analog values. I'll just shorten the screen. Yeah, you can see the analog values which I'm getting on A5 0 to 1023. See, when it is on 0, my left motor is with max RPM, and when it is on 1023, my right motor is on max RPM, and when it is at the center, my both the motors are tentatively running at a similar RPM. तो आप देख पा रहे हो कि जब ये 0 पे है, मिनिमम इस पे है, मैं थोड़ा कोड को शॉर्ट कर देता हूँ सो दैट आपको दिखाई दे। ओके, तो आप देख पा रहे हो यहाँ पे कि जब मेरा पोटेंशियोमीटर 0 पे है, मतलब जहाँ पे ग्राउंड कनेक्टेड है, तो देखिए जब ये 0 पे है तब लेफ्ट साइड की मोटर मैक्स आरपीएम पे, मतलब आरपीएम 143 है, जबकि राइट साइड का आरपीएम 0 है। उसी तरह अगर मैं इसको रोटेट करूंगा और इधर लेके जाऊंगा, इधर 5 वोल्ट की तरफ, सो अभी मेरे राइट साइड की मोटर 143 पे घूम रही है और लेफ्ट साइड का 0 है। और उसी तरह अगर मैं इसको सेंटर में रखूंगा, सो मेरी दोनों मोटर्स टेंटेटिवली सिमिलर आरपीएम पे घूम रही है। सो दिस इज अ सिंपल प्रोजेक्ट जिसमें मैंने पोटेंशियोमीटर का यूज करके अपने रोबोट को स्टीयरिंग कंट्रोल दिया है। आई होप आपको आज का प्रोजेक्ट पसंद आया हो। आज हमने नया डिवाइस सीखा जिसका नाम है मोटर ड्राइवर L293D। सो प्लीज सब्सक्राइब टू माई चैनल, डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, and also share it with your friends. Thank you for your time. Have a good day. Jai Hind.